Hello friends, now we will study in this session our mathematics chapter number 4, exponents and power. What is exponents and what is power? Here we will see exponents and power. The exponents and power in this chapter we have to study indices. When a number is multiplied by itself many a times, the product can be written as a shorter form known as the exponential form. If we have a number and it is multiplied by many a times, means if we multiply 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times, means 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 7 times. So it is a lengthy process to write such a number. So we have a shorter form to write this number, that is 2 to the power 7. Here when a number is multiplied by itself many a times, the product can be written as a shorter form known as the exponential form. The number being multiplied by itself is called base. Here 2 into 2 into 2 means 2 is multiplied by 7 times. The number 2 is multiplied by 7 times. The number 2 can be called as base. And how many times it is multiplied? It is multiplied by 7 times. Though we can call the 7 as a index, power or exponent. The number of times is used in the product is called as the power, index or exponent. Our example is 2. If we multiply 2 for 7 times, we have to write this 2 into 2 into 2 for 7 times. Here 2 is a base, means the number multiplied, when the number is multiplied by itself many a times. How many times it is multiplied here? Here it is multiplied, 2 is multiplied by 7 times, so we can call 2 as a base and 7 as power or index. Similarly, when a number has no index or power, it is understood that the power is 1. When there is no number written on the power, suppose we have given a base x and there is no power or index written on the x, so you have to assume that there is 1, that is the power of x is 1. And power of negative number, in case of the negative number, if the base is given to you negative and the power is given as a positive number, power is always a positive number. So in case when you have given base a negative number and it is multiplied by or the exponent or the index is odd, so the product of the number will be negative. And if the base is negative and the power or index, what we mean to say, the power or index is positive, then the product of the number will be positive. Here we have seen that 2 to the power 7, here 2 is base and 7 is power, index, what so we call exponent. And in the power of negative numbers, if you have given a negative number and the power is odd, then the product of the number is negative. And if the base is negative and the power or index is positive, then index is positive and it is even number, always it is a even number, then your product will be positive. So हम यहाँ पर क्या देखें, अपने को एक्सपोनेंट्स एंड पावर जो अपना चैप्टर है उसके अंतर्गत अपने को क्या देखना है, वी हैव टू सी व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज एक्सपोनेंट. बेस क्या है एंड एक्सपोनेंट क्या है? वो नंबर जो ज़्यादा बार मल्टीप्लाई किया गया, म्हणजे मीन्स अपने को अपने लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, सपोज 7 टाइम्स लिखना है, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, व्हाट वी विल राइट, आम्हाला काय लिहायला पाहिजे 2 टू द पावर 7. काय लिहायला पाहिजे 2 टू द पावर 7 मीन्स 7 इज बेस एंड 7 इज इंडेक्स एंड 2 इज बेस. 2 टू द पावर 7, हियर 2 टू द पावर 7, 2 इज बेस and 7 is index. Now when similarly when the number इसी तरह हम क्या देखेंगे, जो नंबर को पावर या इंडेक्स लिखा नहीं गया उसको हम क्या समझेंगे, पावर 1 है, पावर 1 है. और निगेटिव अगर बेस रहा और उसका पावर ऑड रहा
तो हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा, जो आंसर रहेगा वो निगेटिव रहेगा। और अगर बेस निगेटिव रहेगा, पावर इवन रहेगा, तो हमारा प्रोडक्ट पॉझिटिव्ह रहेगा। म्हणजे जर आपला बेस निगेटिव्ह आहे, हिअर -1 इज बेस अँड 1 इज द index, so we can call as -1. -1 means -1 is a odd number, so the product will be -1. And if we have got -1 to the power 2 is even number but the base is -1, so we can multiply it by -1 for 2 times, so -1 into -1, that is +1, so we get +1 as an answer. So we can say here, when the base is negative and power is even, the product will be positive. Now we are going to study exercise number 4.1, and that is question number 4. In exercise number 4.1, question number 4, the 3 questions are easy and that you can do it orally. Now we are doing our question number 4. Please identify the greater number in each of the following. Here the 2 numbers are given, 5 to the power 4 and 4 to the power 5. Among these 2 numbers, you have to identify which number is greater and which number is small. So first of all, we will take this 5 by 4. You have to simplify this 5 by 4. That is 5 into 5 into 5 into 5. That is 5 is 25, 25 5 are 125, 125 5 are 625. The number 5 to the power 4 is equal to here 625, and 4 to the power 5, that is 4 into 4 into 4 into 4, means it is 5 times 4. Now 4 for the 16, 16 for the 64, 64 for the 256, and 256 for the 1024. Here we can clearly identify that 1024 is greater than 625. That is 1024 is greater than 625. Therefore 4 by 5 is greater than 5 by 4. Now second number, -4 by 4 and -4 to the power -4 to the power 4 and -9 to the power 3. Here we have to multiply -4 4 times, because -4 is base and power is 4. You have to multiply -4 by 4 times. That 4 is a even number. The product will be positive. Here 4 for the 16. 16 is positive. 16 for the 64. That is negative. 64 minus 64, because it is multiplied by 3 times, odd number. And 64 minus 64 into -4, that is 256, means plus 256. And of this 9 into 9 into 9, you have to multiply 9 for 3 times, because -9 is a base and power is 3. So you have to multiply it by 9 -9 3 times. So 9 9s are 81, 81 9s are -229. Why minus? Because 3 is odd number. So we can clearly say that 256 is greater than minus 729, because -729 is negative number. तो यहाँ पर हमने -4 को 4 बार मल्टीप्लाई करें, क्यों? क्योंकि पावर 4 है। और -3 को -9 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पावर 3 है। -4 को 4 बार मल्टीप्लाई करें, 4 इज इवन नंबर, इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो 256 हमारा प्रोडक्ट आया। उसके बाद -9 को हमने 3 मरतबा मल्टीप्लाई करे, हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि पावर हमारा ऑड है। तो हमने -9 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करे, तो हमारा आंसर आ गया -729। तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो हम यहाँ क्लियरली बोल सकते हैं कि -256 इज ग्रेटर देन -729। So alternately -4 to the power 4 is greater than -9 to the power 3. Now second question, fifth one question our in exercise number 4.1, simplify the following. Which are those number?
5 to the power 3 and 3 to the power 4. Here we have what is, first of all, say me which one is base and which one is index. Here first number 5 is base and 3 is index. So we have to multiply 5 3 times and 3 4 times. So we will calculate it. 5 to the power 3 means 5 into 5 into 5, that is 125, and 3 to the power 4 means 3 into 3 into 3 into 3. 3 multiplied by 4 times. So it will be 81. So we can clearly say that 125 into 81. The answer will be 1125. So you can write as 5 to the power 3 into 3 to the power 4 is equal to 10,125 means 10,125. Now second question is minus 4 to the power 4. Here base is minus means negative and it is multiplied by 4 times means even times. So the answer will be positive. Here we will multiply minus 4 by itself. How many times? 4 times. 1, 2, 3, 4. When 4 4 are 16, 16 4 are 64, and 64 4 are 256. 256 will be positive, and 256 multiplied by 0. Any number multiplied by 0 means 0. यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा, 5 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 4. 5 टू द पावर 3 बोले तो हमारे पास बेस है 5 और पावर है 3, तो हमको 5 को 3 मरतबा 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करने का, तो आंसर आएगा 125, और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का, तो आंसर आएगा हमारा 121. तो 125 को 81 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 10,125. कितना आएगा? 10,125. अल्टीमेटली इन सेकेंड क्वेश्चन वन ऑफ द number is 0. So any number multiplied by 0 means 0. We have to solve this problem. That's why we are going forward, or else we can give answer here only. हम यहाँ पर ही आंसर दे सकते. क्यों? कोई भी नंबर, चाहे वो लाख, it may be 10, 100,000, 10,000, lakh, crore. If it is multiplied by 0, the answer will be 0. So हम यहाँ बोल सकते हैं उसका आंसर 0, लेकिन हमें पूरा प्रॉब्लम करना है, इससे हम आगे फर्दर आगे बढ़ सकते हैं. तो हमें वो पहले स्टेप में क्या है, -4 टू द पावर 4. अब हमारे पास बेस है -4 और पावर है 4, तो हमको क्या करना पड़ेगा, -4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 इवन है, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम नेगेटिव नंबर को, तो हमारा आंसर प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव. तो हमारा प्रोडक्ट आ गया 256, और 256 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो पावर, कौन सा भी पावर है दो, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0. वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. द नंबर इज गिवन 96. The number is given 96. We have to find the prime factorization in the exponential form. 96. Which are the factors of this 96? First of all, tell me what is prime factorization. Prime number is a number that has only one, that is divided by only one and itself. Means a number which have the factors 1 and the number itself. So this is the prime number. Hence we have to find the prime factorization in the exponential form. Now the number is 96. The factor of 96 is 2 into 2 into 2 into 2 means 2, 5 times into 3. So we can write it as 2 to the power 5 into 3. Here 2 is also prime number, 3 is prime number, 5 is prime number. Now here number next is 504. So we have to factorize this 504. 504 divided by 2 means 252. It is again divide this by 2. 252 divided by 2 means 126. 126 divided by 2 means 63. 63 divided by 3. Now it is odd in the units place, so it cannot be divided by even number. So we have to take 3. 3 is divided by 63 means 21. 2 3s are 6, 3 1s are 3.
Now again it can be divided by 3 because 1 is odd and it is in the units place. So it can also be divided by 3. 3 7 are 21 and 7 1 are 7. Here how many times 2? 1, 2, 3 times. 1, 2, 3 times 2 and 3, 1, 2 times. 2 times 3 and 7. That is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 and multiplied by 7. So we can write it in exponential form as 2 to the power 3 into 3 to the power 2 and 7. Here are this prime factorization in the exponential form. Now we will see the numbers, greater numbers and smaller numbers. Now here exercise number 4.1, question number 6. Evaluate the following. Evaluate means you have to simplify all this. That is minus 4 to the power 3 minus 2 to the power 4 minus 1 to the power 45. Now first of all solve this one. Minus 4 to the power 3 means minus 64 minus 2 to the power 4. Here 4 is even number, here 3 is odd number. So the product of this power will be negative and this will be positive. So minus 64 into 16 and this minus 1 to the power 45. Here minus 1 to the power 45. 45 is odd number and minus 1 is base. Minus 1 is multiplied by 45 times. So this is odd number. यहाँ पर ये odd number होने की वजह से minus 1 को हम नेगेटिव टाइम्स में प्रोडक्ट आता. तो माइनस इसका प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा माइनस 1. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ minus 1 to the power 45, that is minus 1. So minus 64 into 16, the product will be 2624 into minus 1 multiplied by minus 1. Minus into minus will be positive and 2624 multiplied by 1 means 2624. That is answer will be positive. And in next one, minus 10 to the power 4 minus 5 to the power 4. Here base is minus and index is even. So our product will be positive. How many? This is unit 10. How many zeros will be there? This 4 zeros. 1 2 3 4. यहाँ पर पावर कितना है 4. तो हमको 10 to the power 4 है. तो हमारे 10 के अंदर कितने जीरो आएंगे? 1 के बाद 4 जीरो. After 1 we will have to add 4 zeros. So unit 10, 100, 1000, 10,000. That will be 10,000 and minus 5 to the power 4. The product will be positive because the index is even number. So minus 5 multiplied by 4 is plus 625. This minus this is equal to 1000 10,000 40 minus this 625. So now do the subtraction. 10,000 minus 625, that will be 9,375 will be your answer. What will be your answer? तुम्हारा आंसर क्या आएगा? हमने 10 को जो है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. इंडेक्स कितना है 4 टाइम्स. सो हमारा इंडेक्स इवन है तो हमारा प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव. यहाँ पर आएगा 10,000 और माइनस 5 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. बोले तो इंडेक्स इवन है तो हमारा प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव. तो 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625. So that will be plus only. So 10,000 multiply minus 625 means 9,375. Now second question is question number 7. Express the following numbers in the power of their prime factors. What are the prime factors? First of all we have to say prime number. Prime number is a number which has the factor 1 and the number itself are called prime number. So we have to find the prime factors of the number. Express the following numbers as power of their prime factor. So number is
1296. First of all, find the factors of this 1296. तो हमने यहाँ इसके फैक्टर मालूम करेंगे. इसके फैक्टर कितने होते हैं? 1296 को 2 से डिवाइड करो. क्यों 2 से डिवाइड करो? बिकॉज यूनिट्स के प्लेस पे, वंस के प्लेस पे इवन नंबर है. 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिला? 648. इसी तरह ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड करते करते गए हम, तो हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स मिला. यहाँ पे कैसा? 648 मीन्स इन वंस प्लेस अगेन देयर इज इवन नंबर. फिर हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. 2 डिवाइडेड बाय 648 बोले तो 324. अगेन हमको अगेन वी हैव गॉट इवन नंबर इन वंस प्लेस, सो अगेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 2. so 2 divided by 324 means 162. तो हमको ये 4 टाइम्स मिल गया. अब यहाँ पर फिर हम 162 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं. 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ गया 81. अब 81 के अंदर यूनिट्स के प्लेस पे, वंस के प्लेस पे और नंबर है तो इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता, 2 से नहीं होता. चलो हम देखेंगे 3 से. 3 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया 3 2 6 एंड 3 7 21. तो आ गया 27. फिर से यूनिट्स के प्लेस पे, वंस के प्लेस पे और नंबर है तो 3 से डिवाइड होता है. 3 9 27. फिर 9 और नंबर है, फिर 3 से डिवाइड होता है. 3 3 9 एंड 3 1 3. 1 will be the answer. What are the factors? Factors are 2 into 2 into 2 into 2 means 2 4 times. 1 2 3 4. And next 3 how many times? 4 times. 1 2 3 4 times. So we will write 2 into 2 into 2 means 4 times. 3 into 3 into 3 into 3 means this is also 4 times. This is also 4 times. Now we can write 2 to the power 4 into 3 to the power 4 means these our numbers 2 and 3 are prime factors of the 1296. Now second one is 4250. 4250 को हम किसके फैक्टर्स देखना है. अब हम यहाँ क्या देखेंगे? व्हाट वी विल सी हियर? वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर इन द वंस प्लेस. वंस प्लेस के अंदर, यूनिट्स के प्लेस के अंदर कौन सा नंबर है? अपना 0. इट कैन बी डिवाइडेड बाय even number. If there is 0 in units place, the number can be divided by 2 or can be divided by even number. तो सबसे छोटा even number हमारे पास 2 है. 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से हमने 4250 को डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2125. अब यहाँ पर now here we have odd number in the ones place. सो अब ये हमारा ऑड नंबर है. ऑड नंबर होने की वजह से ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. आप किससे डिवाइड होगा? वी विल 3 से. ये प्राइम नंबर होने की वजह से उसके इटसेल्फ वहीं से 5 से डिवाइड होगा. इट विल डिवाइड बाय इटसेल्फ ओनली. तो 5 से डिवाइड करें. 5 4 20 रिमेन 1 12. 5 2 10 अगेन रिमेन 1 रिमेन 2 25. 5 5 25. फिर अब वी गॉट ऑड नंबर इन वंस प्लेस. हमको फिर से ऑड नंबर ही मिल गया वंस प्लेस पे, तो ये फिर से 5 से डिवाइड होगा. 5 4 5 8 40 एंड 5 5 25. अगेन फिर ऑड नंबर मिला, 5 मिला. 5 इज अ प्राइम नंबर सो इट कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ ओनली. फिर 5 से डिवाइड करें हमने. 5 से डिवाइड करें 85 को तो 5 1 5 एंड 5 7 35. 35 7 क्या होगा? 17 हमारा आंसर आया. 17 में प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली. तो फिर हम इसको 75 से डिवाइड करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर 1 और वो नंबर खुद ही रहता. तो हम यहाँ पे 17 से डिवाइड करेंगे. हमारा आंसर आ गया 17 मतलब 17 1. तो हमारे फैक्टर्स कौन से मिले हमारे को? 2 एक मिला और 5 कितने बार मिला? 3 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स वी गॉट 5? 3 टाइम्स. 1 2 3. Here 5 is 3 times. So we can write this as 2 into 5 to the power 3 into 17. So the prime power, the answer will be
4250, इसका हमको पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर लेने का। तो प्राइम फैक्टर हमारे क्या है, 2 है, 5 है, 3 है। तो 2 है, 5 है और 17 है। तो इसके हमको पावर्स क्या आएंगे, 2 का पावर 1 आएगा, 5 का पावर 3 आएगा, 17 का पावर 1 आएगा। तो ये हमारा 2 × 5 to the power 3 × 17 will be the answer of this question.